Good morning, friends. Welcome to my channel. So today I'm going to explain about the how to get SIN number. SIN number के लिए कैसे अप्लाई करेंगे आइए जानते हैं इस वीडियो में. So there are certain doubts about SIN number, and I'm getting a lot of questions like how to register and how to get your SIN number. Should it be done before the GIC or after the GIC? So I'm going to answer all these questions in this video. Now, to begin with, there is no such what do you say synchronizical way wherein ये GIC के पहले ही होना चाहिए या फिर GIC के बाद होना चाहिए. Either और भी चलता है. So let's say for me, I landed when it was a public holiday for the federal, so Service Canada was closed. बट मैंने फिर जीआईसी एक्टिवेट करवा लिया विदाउट द सिन नंबर. सो एज सच कोई इसका प्री रिक्विजिट नहीं है दैट सिन नंबर होगा तो ही जीआईसी ओपन होगा या तो जीआईसी होगा तभी सिन नंबर होगा. सो देयर इज़ नो डिपेंडेंसी बिटवीन बोथ दीज things. So, although speaking of the GIC is a separate topic, I'm going to cover on a separate video. But speaking of the SIN number, I'm going to cover in this video is like about the SIN. So you can firstly find your Service Canada. So there is, if you are in Ontario, then there is also Service Ontario. So do not confuse yourself with the Service Ontario with Service Canada. So आपको just make sure that you go to Service Canada instead, wherein आपको आपका SIN number मिलेगा. So ये federal body होती है, wherein Service Ontario is a state level body. So हमको Service Canada में जाना है in order to apply for SIN or in order to get the SIN. ना उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अपने को. सो बेसिकली अपने को उसके लिए स्टडी परमिट चाहिए होता है एंड योर पासपोर्ट. दीज टू डॉक्यूमेंट्स आर सफिशिएंट बट कैरी योर अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल इन केस इट इज़ नीडेड. बट अभी तक तो मैंने जितनों को भी देखा है उनको जस्ट पासपोर्ट एंड स्टडी परमिट से उसका सिन नंबर हो जाता है. So firstly, you need to check on the website which is or on the Google Maps that which is the nearest Service Canada near to your location, and just go there. If you are coming after 15th of, if you're coming 15 days before your intake starts, then probably बहुत लंबी line होगी. So just make sure that you are ready for that. So around 2 से 2.5 घंटे खड़े रहना पड़ेगा and just wear your proper jacket and other attire so that you'll not feel freezing. Because 2 ढाई घंटे खड़े रहना windy and chilling environment में is really tough. So just ensure that. Furthermore, जैसे ही आप क्यू में लगते हैं then you can reach inside. Then वहाँ पे एक sort of टोकन तो नहीं बोलेंगे बट वही आपको क्यू में एक रिसेप्शन काइंड ऑफ रहता है. दे विल आस्क यू लाइक व्हाट यू आर हियर फॉर. सो दे विल then you need to inform that you are here to apply for SIN. देन एक बार सिन वो बोलेगी ठीक है देन व्हाट इज़ योर ज़िप कोड. देन आपको आपका ज़िप कोड याद रखना है और ज़िप कोड बोल देना है. नेसेसरी नहीं है कि आपका खुद का ही रेंट हो या फिर आपका खुद का ही घर हो. इट यू कैन गिव योर फ्रेंड्स ज़िप कोड या कोई भी जहाँ पे आप अभी टेम्पररी स्टे कर रहे हैं. फर्दरमोर वंस यू आर डन विद दिस देन आपको वेटिंग एरिया में भेज दिया जाता है जहाँ पे आपको वेट करना रहता है. एज वेल एज आपको एक स्लिप दी जाती है, एक लीफलेट, जिसमें आपको एक फॉर्म भरना रहता है जिसका जो इवेंचुअली आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है. सो उसमें आपके फादर नेम का फर्स्ट नेम लिखना है और सरनेम लिखना है. फादर की केस बहुत ही क्लियर है. एक कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों में थी जब मैं वहाँ पे बैठा हुआ था दैट मदर नेम का लिखा था कि फर्स्ट नेम, पेरेंट्स फर्स्ट नेम एंड देन लिखा था कि सरनेम एट द टाइम ऑफ बर्थ. नाउ ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है कि लाइक वेदर इट इज़ द एप्लीकेंट्स बर्थ या मदर्स बर्थ. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि मदर्स बर्थ, बर्थ का बेसिकली मदर्स एट द टाइम ऑफ बर्थ जो भी उनका मेडन नेम रहेगा वो आपको लिखना है, ना ही कि उनका करंट सर नेम. सो जस्ट मेक श्योर कि आपके जो मदर का मेडन नेम है वो आप वही लिखिए.
or this plays a key role and it is a mandatory field in that form, so just ensure that. Then the third question आता है that are you twins or not. so अगर आप twins हैं कि नहीं उसके बारे में उसका yes या no में चेक बॉक्स करना रहेगा. And then you need to key in your address and phone number as well as the zip code. so अगर इतना फॉर्म भर के देन आपको वेट करना है और काफ़ी सारे काउंटर्स रहेंगे. आई थिंक अराउंड मोर देन 12 काउंटर्स है सर्विस कनाडा में जहाँ पे मैं गया था. और वहाँ पे they will allow they will announce your name, over the mic, that okay, you have to come to a certain desk. And then once you go to the desk, then they will ask for the study permit and passport name. They will verify your name. इसके बाद वो आपको आपसे वो वाला फॉर्म मांगेंगे जो आपने भरा था. और फिर देन आफ्टर दैट यू they will confirm the spelling and everything, that is it correct or not. And this is going to be a security questions answer वैसा बोलेंगे. And then they will ask to read the privacy statement. वहाँ पे एक privacy statement का extendee जैसा था वहाँ पे that ये डेटा शेयर किया जाएगा उनकी जो इंटरनल फेडरल एजेंसीज हैं उनको. सो यू नीड टू जस्ट रीड एंड से yes. And then once it is done, then they will provide you the printout and they will say that okay, you are good to go. And they'll also say that you need to keep this confidential. Just make sure that ये सबको कोट नहीं करना है आपको SN number. इट इज़ हाईली कॉन्फिडेंशियल. सिर्फ एम्प्लॉयर को कोड करना है या तो फिर कोई भी फेडरल स्कीम है या तो कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम है कि जहाँ पे कुछ आपको बेनिफिट लेना है वहाँ पे ही ये सिन नंबर यूज़ होता है. सो जस्ट मेक श्योर आप कहीं भी ना दें. इट इज़ हाईली सेंसिटिव डॉक्यूमेंट एंड इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज टू एवरीवन. And once you have this SIN number, you can take a printout with you and you can keep it in your important documents. You can take a picture, you can convert it to PDF, and you can save it to some cloud, Google Drive or OneDrive, so that it will be easily accessible. So next time when you get a job, you'll definitely it will be useful for you. And I'm sure like this video will be helpful to answer your all questions. If you have any questions, then you can certainly comment, and I'll be happy to answer those questions. Till then, definitely, I will see you in another video. Thanks for watching my video, and do subscribe. That this will definitely motivates me. So uh, please do not forget to subscribe and click on the bell icon to see and stay tuned for my journey ahead in Canada. Thank you very much.